Yeah, you can start, sir. You can start. Okay. So what all acts we have covered so far? Sir, Employee Compensation Act 1923, Factory Act 1948, Bonus Act, and Gratuity Act 1972. Okay. 2-3 more things as far as acts and compliance are concerned. The contract labor. Okay. Then about working environment or working conditions of the workmen, Model Standing Order or the Industrial Standing Order Act, and something about disciplinary proceedings. Okay, so we will try to touch up these 3 areas today. Okay, so there are put together around 50 acts. Now we cannot cover all the 50 acts in detail, but these are some of the key areas. Factories Act is Industrial Dispute Act is another important act, but that's a very huge act. Some of the key definitions we will cover in subsequent session. Very good evening, Shakti. Okay, so we'll go with this contract labor. What is the act says? What is the name of the act? The Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. Okay, so this is how to regulate contract labor, and if you want to remove contract labor, right? So regulation and abolition. It has lot of amendments. The latest was, I think, in 2017 or 2019. Okay, this is also a central act, and it also has a central rule as well as the state rules. Okay, so if you see, we have 7 chapters and 35 sections, right? Similar to Factories Act, certain things are common in Factories Act and Contract Labor Act, more specific and defined. Now, what is contract labor? Temporary labor, a labor who is signed or appointed on the basis of a fixed contract. It's not a permanent labor, or it's not a permanent employee in particular place. Okay. Anyone? So the labor who has been like signed for some specific time period, and once that time period gets over, then he would be like he would be asked to set off from the job. Like for a specific contract, they are signed in, and then once the contract work is done, and then they are like asked to leave. Okay. Prachi? Yes, sir. Any guess? So, when a labor is signed on the basis of a contract. They are called contract labor. Yes, sir. When Yes, they yes, work sir. on the basis of a contract. Okay. Ji? Sir, according to my opinion, the labor whose freedom is restricted for a certain period of time according to the laws. Okay. Yes, Adiricha? आवाज नहीं आ रही है? अभी भी नहीं? वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम.
Okay. So in 1970, this act was enacted, gazetted on 5th September 1970. The object of this act as to why, and the central rule which came in 1971, Contract Labor Regulation and Abolition Central Rules, 1971. Okay, so act and rules, you know the difference. Act is what to do, rule is how to do. Yes, sir. So rule will have more specifications, act will have the generic definitions of certain things. Okay, implement कैसे करना है rules में लिखा होगा, क्या करना है act में लिखा होगा, और why it is required, what is the purpose. So the object of this act was to do away with the abuses of the system of employment of contract labor. Okay, so as many of you said that it is a temporary employment. Okay, so where the freedom is restricted by laws, there is no freedom restricted, rather they are given more freedom in order to execute their work. Okay, so generally in the industry, an employer hires some people for some activity which are not directly related to production. And the purpose of this act was to regularize the employment of such people, okay, who are not directly involved in the production or manufacturing. You have some perennial activities, some associated activities around your manufacturing process or around your key process, which is not your core. है ना, कॉलेज में पढ़ाना है तो टीचिंग इज ए कोर फंक्शन, isn't it? पेपर बनाना, Yes, sir. सिलेबस बनाना, टीचिंग, taking classes, it's a core function. Now उसके आसपास उसके अलावा भी कुछ ऐसे काम हैं जो कॉलेज में करने पड़ेंगे या करवाने पड़ेंगे, जैसे कॉलेज की साफ सफाई. उसके लिए आप किसी टीचर को अपॉइंट नहीं कर सकते कि भाई रोज तुमको झाड़ू लगाना है पूरे, या जो क्लास टीचर अपने अपने क्लास में झाड़ू लगाएगा. You can't do that, right? So you need someone who would do this perennial activities. सर जैसे जो कॉलेज में या कहीं मतलब मैनेजमेंट देखते हैं तो वो भी तो वर्कर में है, मतलब समझा नहीं. जैसे कोऑर्डिनेटर होते हैं, हम वो होते हैं, क्या कहते हैं, हेड डिपार्टमेंट होते हैं. ओके, तो ये सब भी वर्कर में आएंगे. क्यों? क्योंकि सर आपने बोला ना कि मतलब टीचिंग के अलावा जैसे. नहीं, see, administration is your core function. एडमिशन करना, फीस लेना, ये सब तो कोर फंक्शन है ना. बट साफ सफाई करना कॉलेज का कोर फंक्शन नहीं है. पेड़ पौधे उगाना कॉलेज का कोर फंक्शन नहीं. गार्डनिंग करना किसी प्रोफेसर का काम नहीं, वो उसकी कोर एक्टिविटी भी नहीं है. लेकिन उस कॉलेज में वो एक्टिविटी हो रही है, आपके स्कूल में या कॉलेज में वो एक्टिविटी हो रही है. But sir, हाँ, cleaning is a necessary part. Means अगर cleaning नहीं रहेगा तो उसके बिना कैसे कोई काम चलेगा. तो इसके लिए तो permanent employee चाहिए ना. तो आप क्लीनिंग इज द कोर एक्टिविटी ऑफ द कॉलेज. No sir. कॉलेज का बेसिक पर्पस क्या है? टू एजुकेट. Yes sir. To provide education. For that, what is the core requirement? Requirement is you should have skilled professors, knowledge professors who would impart knowledge. है ना? But other than education, other than this, you will need certain activities in order to have a good functioning of the college, right? कोई आएगा तो साफ सुथरा दिखे, इसके लिए साफ सफाई जरूरी है. आप उसके लिए परमानेंट एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, लेकिन मैं क्यों लायबिलिटी रखूं?
सर एक क्वेश्चन, जैसे जो बस ड्राइवर होते हैं वो भी वर्कर में आएंगे कि मतलब? देखो, डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन हम आई थिंक वी डिस्कस्ड Yes, sir. in Factories Act. The definition of workman or worker is also in Industrial Dispute Act. Okay. The definition of employee we have seen in Payment of Bonus Act and Payment of Gratuity Act. है ना? तो वर्कर मतलब क्या, अलग अलग एक्ट में उसका डेफिनेशन अलग अलग है. कहीं वर्कमैन है, कहीं एम्प्लॉय है, राइट? तो हम किस एक्ट के संदर्भ में देख रहे हैं उसके हिसाब से उसका क्या डेफिनेशन होगा वो देखना पड़ेगा. As far as this particular act is concerned, so here anybody who is higher or reward, who is higher on wage or reward can be a worker, provided he is hired through a contractor. तो अगर बस का ड्राइवर उसका सैलरी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है तो वो एम्प्लॉय है, ही इज नॉट ए वर्क कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर. लेकिन किसी को आपने बोला है कि तुमको मेरे कॉलेज के बच्चों को लाना ले जाना है, you outsource that process to someone. So there is some travel agency who is operating buses and who will take care of the transportation of your college student. So in that case, that driver can be a contract worker. Can be. Not that he will be, but he can be within the definition of this particular act. Yeah? Yes, sir. But like suppose if there is any occasion in school or college और एक दो दिन के इवेंट के लिए केटरिंग का व्यवस्था हो रहा है तो it will be come under the contract labor? No, it will not come under the contract labor as such. Now, there are certain provisions in the act. Okay. See, that is a contract college is outsourced for a while. For those 2 days, those are the contract workers. Okay. And there is a relation between a principal employer and contractor. Okay. So yes, indirectly they will be contract workers assigned for a specific task. ठीक है ना? And as long as they are in your college, yes, they will be they'll be the responsibility of the principal employer. So I'm not talking about the college. We talk about the we talk in the context of the organization. Okay, the factory or facilities, establishment. Okay, the word used is establishment. So any factory or a area where 20 or more people are ordinarily employed. ऐसा लिखा है. तो आगे देखते हैं. So the object of this act is to regulate
Just give me 5 minutes and I'll connect again. Just give me 5 minutes. There is Okay, some sir. concern here. Huh? Just give me 5 Okay, sir.
Yes. So I'm back. Sorry for inconvenience. It's okay, sir. Thank you. So, object of this act is to regulate the employment of contract labor and its abolition in certain circumstances. तो जहां आपको रखना है वहां कैसे रखना है, और अगर नहीं रखना है तो उसको निकालेंगे कैसे, या निकालने के लिए क्या प्रावधान है, कोई है कि नहीं, राइट? The concern for providing legislative protection to this category of workers whose condition have been found to be abnormal resulted in the enactment of Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. तो ऐसे वर्कर्स जिनकी कंडीशन थोड़ी सी दुखद है, जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को एक संवैधानिक सुरक्षा देना, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर act, providing legislative protection, right? Applicability, it is applicable to whole of India, पूरे भारत में लागू होता है, और to every establishment, in which 20 or more workmen are employed or were employed on any day of preceding 12 months as contract labor. तो हर वो संस्था जिसमें साल के किसी भी दिन 20 या उससे ज्यादा लोग एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय हुए हैं, उस पे ये एक्ट लागू होगा. In the amendment, there are certain changes to this number. ठीक है, तो रिस्पेक्टिव स्टेट में अमेंडमेंट में या सेंट्रल अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस है, और नया जो लेबर कोड आने वाला है उसमें भी इस नंबर में फर्क है. सो दिस नंबर विल गो अप टू 50. ओके, बट एज ऑफ नाउ, एज फॉर द एक्ट इज कंसर्न, 20 is the number. So every establishment in which 20 or more workmen are employed or were employed on any day of preceding 12 months. कहीं कहीं भी लिखा होता है ordinarily employed. Okay, so ordinarily employed का मतलब भी यही है कि पिछले 12 महीने में किसी भी दिन एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर आपके यहाँ कोई अपॉइंटमेंट है, 20 लोगों से ज्यादा, 20 या ज्यादा लोग अपॉइंट हुए हैं, so that establishment will come under application of this particular act, CLRA, Contract Labor Regulation and Abolition Act, CLRA. Okay, same way it is also applicable to every contractor who employs or have employed on any day of preceding 12 months 20 or more workmen. So this number is also going to be 50. Okay. Now what is the difference? क्या फर्क है इन दोनों में? इन दोनों में क्या फर्क है? Point number 1 and point number 2, what is the difference? So the first one is talking about an establishment and second one is talking about an individual contractor. So establishment is what? Establishment, maybe it can Sir, be an about the organization. organization. Yeah, so establishment is organization, right? It can be factory, mine, fields, anything.
So that is an establishment. So a company, if on any day in the preceding 12 months have employed 20 workmen through contractor, this act is applicable to that company. Okay. Now, if company has employed 20 contract worker through different contractors and each contractor has only five employees. Yes. I think the number is having some network issue. Okay. So now, if an establishment has employed 25 contract workers through 5 different contractors, okay, each contractor has deployed 5 workers. सर तो भी ये एक्ट उस पे भी लागू होगा? तो ये एक्ट खाली इस्टेब्लिशमेंट पे लागू होगा, कॉन्ट्रैक्टर पे लागू नहीं होगा। हाँ, वही बात। तो क्योंकि उसके नंबर 20 से कम है। हाँ, ठीक है। बट इन लेबर कोड अभी जो नया लेजिस्लेशन आएगा, नया कोड जो आएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ विल बी एन एम्प्लॉयर. So then by default, this act will be applicable to contractor as well. Right. But by the time it comes, the current definition is this number are to be checked with the, central rules or the amendment, which is 50 now, that, okay, for 50 work employees, you need not have a license. Okay. Now here, it does not, yeah. But it will be unfair with the contract laborers, and it will be beneficial in establishment or the employed. Yep. Because the rule says now 20 people, and if the number increases to 50, then those people who were getting all the benefits under this act will be, मतलब 20 से 50 हो जाएंगे, तो फिर वो जो 20 तक ही मिलता था वो 50 से होगा तब जाके मिलेगा. तो नहीं मिलेगा नहीं. हाँ, जो प्रोविजंस हैं एक्ट के, okay, that will be applicable to the contractor also, irrespective of the number. Only thing is registration and licensing will not be required. Okay. And the reason of it is ease of doing business. Small scale industries, जो बहुत छोटी इकाइयां हैं, where there are very less number of employees, very less margin. Okay. So for those industries to operate, this is necessary, so that it can be done easily and smoothly. Therefore, those amendments, I think, will be coming in picture. Okay. Okay, sir. Now, this act does not apply to establishment where the work performed is of intermittent or casual nature. मतलब आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं. The person you employed, यहाँ एक typographical error, this is 120 days, not 220, this is 120 days. If the work is performed for more than 120 days in the last 12 months, or if the work is of seasonal nature and it is performed more than 60 days in the year, then it shall not be deemed to be intermittent, then it is a regular work. तो अगर कोई काम ऐसा है या कोई वर्कर ऐसा है जो साल के 12 महीने में से कोई काम ऐसा है जहां पर आपको रिक्वायरमेंट 120 दिन से कम है, या सीजनल बिजनेस है जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट 60 दिन से कम है, that case this act will not be applicable because it becomes intermittent or casual work. ठीक है. In between, intermittent मतलब बीच में.
आपका प्रोसेस है, उसमें आधा प्रोसेस आप कहीं और कराते हैं, बाद में आप क्या लेके आते हैं। जहां करा रहे हैं वहां 120 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। या आप किसी सफाई वाले को बुलाते हो, तो दैट हाउसकीपिंग एजेंसी कैन बी आउट ऑफ दिस एक्ट इफ the person coming from the agency comes only once in a week. So in that case, it becomes an intermittent work only once a week. So only 52 to 60 days will be the applicability. ठीक है ना? Okay. Now कहाँ employ नहीं कर सकते आप? Where you cannot deploy contract labor. Now see, the basic purpose of employing contract labor is what? Why would you not have a permanent employee and would you like to have a contract employee? To save the money. Okay. What else? If we don't want to invest in the training of that same employee, and hence we would shift to some other employee instead of training this the earlier employee. Okay. What else? So you said cost, you said training, then? Why would you employ a contract worker? You are running a factory. Ji. Sir, if the factory is working only seasonal jobs, then permanent means it costs much. Okay. Only time, only that Okay. seasonal time we can employ labor. Okay. So cost, you also saying cost. Srishti also said cost. Anamika says, okay, training nahi dena padega, right? Also, if the work the factory is doing is for a shorter period of time, then in that case, the factory would not go for employing permanent laborers. Okay. Temporary काम है तो आपको permanent labor नहीं चाहिए. Okay. और that sounds okay. Good. Sir, What for else? any urgent project. Perfect. For any urgent project, you need a contract labor. Okay. What else? To fill the gap. Fill Sometimes gap. Okay. Like Gap if of there's what? employees. Okay. Okay. Fantastic. What else? Is contract a temporary workman? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Do you have contract professors in your college? Do you have professors sir. who are ad hoc, not from UPSC? No, sir, we don't have temporary professors, but like in the school days, there was one teacher who used to come for just in the second half, for a very specific time period. She used to come and then she used to go back. Yes, sir. Be Like it that in our training. college, there is a yoga teacher which only comes once in a week. So that may be temporary. But is it temporary? No, sir. मतलब वो permanently आती थी, but once in a week तो इसलिए. Correct. So not necessary a contract employee is a temporary employee. Not necessary. Not necessary. है ना? But sir, contract are usually temporary only. Contract are for specified time period. Once that time period gets over or gets expired, the contract comes to an end.
You can renew the contract. Same person can come for 10 years also. No? Yes or no? Same professor till retirement will come as a contract professor. So, for example, in Delhi, there is a contract teachers whose contract is just getting renewal and renewal. They are not permanent. They are not on the school's payroll. Right? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yeah. Fine then. So when the contract is being renewed all the time, why don't we convert that into a permanent thing? That they have to fight. I don't want to. I'm happy. See, the purpose of contract is of ease of doing things. So when I don't have work, I can tell them that I don't need your services anymore because I don't have work. I don't have work for you. So if tomorrow school closes, okay, kal se mat aana, it's okay. For permanent professors, you have to give ERS, this and whatnot. Yes. So the basic purpose of having a contract is to pass on certain liabilities to contractor. उस आदमी का जिम्मेदारी किसका? जो उसको लेके आया उसका. It is not the cost. I'll pay same benefits what I'm paying to a regular employee to the contract employee. I can. है ना? I can. But I want someone else to look after them. Therefore, I'm keeping someone in between as a contractor. That number one. Number two, that is not my core competency. That work I'm not going to do throughout the year. As you said, that there is an event in the college, you are hiring a this caterer. You don't need caterers throughout the year. Do you? No, na? No, sir. You'll pay a good amount to him, isn't it? Yes, sir. Cost may not be a factor, but then you don't want that entire liability to be on you. That you go search for 50 people, अच्छा कौन महाराज है, कौन अच्छा खाना बनाता है, कौन सब्जी काटेगा, बर्तन धोने के लिए 5 आदमी चाहिए, फिर परोसने के लिए 25 आदमी लगेंगे, है ना? दाल में कॉकरोच है, चावल में क्या गिरा पता नहीं. So all these headache you don't want to take on your head, right? So you look for an agency who is an expert in all these activities. Okay, so it is not only the cost but the skill. Sometimes I am not equipped to do that particular task, therefore I'll outsource the task. So I'll contract it. I'll hire someone, okay, or I'll ask someone to help me getting people who can do these activities. Okay, but the contract labor shall not be employed where work is perennial and must go on from day to day. अगर कोई activity ऐसी है जो रोज हो रही है, daily, we have just seen 120 days से ऊपर अगर है, you cannot deploy contract labor. Then it becomes a regular activities. हम कॉलेज में कैंटीन चला रहे हैं, और हमको रोज खाना बनाना है. So in that case, I can deploy a cook. I can hire. Instead of a contract, I can have that cook on my payroll also, because this is the activity that is going to be all 365 days. But it is not my core activity. Manufacturing activity nahi hai. Khana banana is no way connected to my manufacturing activity. Therefore, I can contract it. Right? So where the work is perennial. Sir,
Instead of converting it into a permanent this thing, why don't we keep renewing the contract, like you said? Yes, yes. Generally, that is what is being done. Now there are different, there will be certain changes that will come in the code. Now, as of now, it is only for contract workers who are deployed in non-perennial activities. Activities which are not perennial in nature, which are short-term activities, which are not directly connected to your main core process. Okay, but with changing scenarios, changing work conditions, you and me are not part of contract labor as of now. We are not defined anywhere what we are. A worker is someone who goes to the premise and work. Now we don't go to premise. I work from home. So there are different categories that would be coming in picture with the new labor code, where all these things will be taken care of. Okay. So the basic objective of this contract labor deployment is, number one, cost, of course, yes, but then at the same time, certain liabilities which employer does not want to take directly, so he would do it through some person. मुझे रोज 100 आदमी चाहिए अभी, रोज मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तो I'll ask someone that I need 100 people every day. You manage from whatever source you have. Yes. So I don't want to carry that liability that मैं अपना एक आदमी रोज भेजूंगा, मार्केट पे जाएगा, ढूंढ के लाएगा. No, I will not do this. I would prefer not doing this. So I'll see someone who has such resources available, who can deploy on my request. आज मुझे 100 का जरूरत है 100, कल 50 का जरूरत होगा तो 50, परसों 150 का जरूरत होगा तो 150. Therefore, I will hire someone and I'll contract it. Okay. Certain activities which are not my core, I don't want to invest my time, energy on those areas. I would hire someone from some other sources. Okay. So where the work is non-perennial, the work is incidental and necessary for the work of the factory. Okay. So where the work is not incidental, मतलब काम के main manufacturing process से जुड़ा हुआ अगर काम नहीं है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकता हूं. लेकिन अगर मेरा मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ काम है, तो I should not deploy कॉन्ट्रैक्ट लेबर. इतना काम है जो एक रेगुलर एम्प्लॉय के लिए जरूरी है. The work is sufficient to employ considerable number of full-time workmen. तो जहां पे मैं फुल टाइम असाइनमेंट दे सकता हूं लोगों को, इट इज नॉट टेम्पररी जॉब. द वर्क इज नॉट ऑफ टेम्पररी नेचर, द वर्क इज नॉट ऑफ शॉर्ट टाइम नेचर. इफ इट इज अ फुल टाइम एक्टिविटी 365 days 24/7, I should not deploy contract workers. Correct? Yes. And where the work is being done in most concerns through regular workmen. तो एक काम जो आप रेगुलर वर्कर के पास करा रहे हैं, उसी काम में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी डिप्लॉय किया है, तो देन इट कैन बी नॉन कॉम्प्लायंस. आप भी खाना बनाते हो, आपकी सिस्टर भी खाना बनाती है, एक को अच्छा पगार मिलता है, दूसरे को कम पगार मिलता है. यू आर परमानेंट, शी इज नॉट परमानेंट, तो हल्ला करेगी ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So for same work, same task, if there are both regular workmen and contractual workmen, there are chances of conflict. Okay. Because in equal remuneration, it says same work, same pay. तो अगर दोनों लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, तो दोनों के पगार में फर्क नहीं होना चाहिए, सुविधाओं में फर्क नहीं होना चाहिए. Probably the status of employment should also not be different. Okay. So under such circumstances, you should not deploy contract laborers.
But sir, is it compulsory? Like you said, contract labor can't be employed at such places where his work is as equal to the regular employee. Sorry. Yes, you're saying something? Sir, I asked, is it compulsory that if the organization cannot employ
So you guys there? Yes, sir. Sorry for this intermittent breaks today. Everything is okay, sir. Sorry? Everything is okay. Yes. Everything is okay. Actually, I've got my landlord. So I was just entertaining him and he was entertaining me. Okay. Some work going on. He was here to supervise this. नहीं तो निकाल के बाहर कर देंगे. I was about to message you, Ki. I mean, if there's some issue, then we can conduct. I mean, if you want, we can conduct this class some other day. No. I mean, it'll be fine. Now there will not be any break. It's okay, sir. I know you want to get rid of me, but I'll not give that opportunity to you. Thanks for your concern. Things are all right. No worries. And now we can go through fatapat. What are the okay. So now in this act, there are two terms which are widely used. One is contract worker that we were discussing. Any worker will be a contract labor when he is hired for work of establishment through a contractor with or without the knowledge of principal employer. मालिक की जानकारी के बिना या उसकी जानकारी में कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी के माध्यम से अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ना. So any worker will be a contract labor when he is hired for wage or reward. ऐसा लिखा नहीं है. He is hired even if फोकट में, बिना पैसे के भी अगर वो आपके यहाँ काम कर रहा है और मालिक को पता है या नहीं पता है, whether employer knows or does not know, he will be a contract worker. Now principal employer is someone who employs a contract labor through a contractor. Okay, it can be any government office, department, local authority, head of the office, department, or such other officer as the government or the local authority may specify in this behalf. That is about government offices. In case of factory, the owner or occupier of the factory and the manager. Factory manager के बारे में हमने बात किया है ना, occupier के बारे में हमने पिछले acts में पढ़ा. So that definition stands as it. If any so named under the Factories Act 1948. So Factories Act में employer, occupier, authorized person, all these things we read. So whatever is written in Factories Act 1948 becomes the principal employer. Principal employer मतलब प्रमुख मालिक जिसने अपने किसी काम को आउटसोर्स किया है, or some activities has been done in the premise through someone else. Okay, so that becomes principal employer. And contract labor, someone who is working for principal employer with or without his knowledge through a contractor. Okay. Some other definitions. Now, what is a contractor? So, contractor is a person who undertakes to produce a given result for the establishment. Contractor कौन है? एक ऐसा आदमी है जो establishment को क्या काम चाहिए वो काम लेता है. That is a contractor. Okay. Other than mere supply of goods or such articles of manufacture to such establishment through contract labor, or who supplies contract labor for any work of the establishment
एंड इंक्लूड्स अ सब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब वो खुद किसी और को एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर करके उनके पास से काम ले रहा है। तो या तो आदमी दे रहा है या किसी कंपनी का कोई पूरा काम उसके पास में है, he becomes a contractor. Now what is workman? Workman means any person employed in or in connection with the work of any establishment to do any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, supervisory, technical, clerical work for hire or reward, whether the term of employment can be expressed or implied. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब क्या है? उसको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, दैट इज एक्सप्रेस, या ऐसा मान लिया गया है कि वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, इट इज इम्प्लाइड, है ना? सो अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट और विदाउट एनी एग्रीमेंट और विदाउट एनी एग्रीमेंट, इफ द पर्सन इज वर्किंग फॉर हायर और रिवॉर्ड, मतलब पैसा देके या किसी और तरीके से कंपनसेशन है उसका, फिक्स टर्म, ओके, क्लरिकल, सुपरवाइजर, किसी भी तरह का काम कर रहा है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, देन ही और शी इज ए वर्कमैन, ओके। नाउ व्हेन इट इज नॉट वर्कमैन, is not workman when he is employed in managerial or administrative capacity or supervisory capacity where he is exceeding a wage 500 rupees per mensa, मतलब 15,000 रुपए से ज्यादा का उसका वेज है, और whom any article or material are given out for certain process to return them back. वर्कमैन कौन नहीं है? ऐसा कर्मचारी जो किसी मैनेजरियल या सुपरवाइजर कैपेसिटी में काम कर रहा है, ओके, जिसका पगार 15,000 से ज्यादा है, या जो काम लेके जाता है और पूरा करके लाता है। आपने उसको नट बोल्ट दे दिया, कवर दे दिया, बोले जाओ घर से ढक्कन बना के लाना, रिफिल दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, घर से पेन बना के लाना, है ना? तो कुछ काम जो आप किसी को कहीं और आउटसोर्स करते हो और लेके आता है, वो आपके लिए वर्कमैन नहीं है, ठीक है? और वो इस एक्ट के हिसाब से भी वर्कमैन नहीं है, ओके। नाउ देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी, वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर, ओके। सो एज वी से दैट एनी एस्टेब्लिशमेंट that employs 20 or more contract workers need to get registered under the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, ठीक है? तो एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। There is श्रम सेवा पोर्टल, it's an online portal of Government of India, श्रम सुविधा पोर्टल, I think श्रम सुविधा पोर्टल। So on that Shram Suvidha portal, an establishment will have to register itself for hiring contract laborers. Okay. So as a principal employer, the establishment will register itself on Shram Suvidha portal that I will hire contract workers, or in my establishment I have 20 or more contractual labor, or I will have it, or in any day I had, so I'll register myself as a establishment. At the same time, the contractor will have to obtain a license in order to provide services to any establishment. Okay. Now statute is 20, and as I said that in amendment 50. So if it is 20 or more worker deployed by a contractor, then he is liable to get a license. Okay. Or 50 or more, he is liable to get a license. The contractor need a license to deploy contract workers, and an establishment need a registration in order to hire the contract workers. Okay. So do all the contractors have this license? They have to have. They must have rather. But sometimes what happens, just to avoid this hassle,
what they do, they'll say that we do not have 20 or more contract workers, so we don't need license. Even the establishments will also try to bypass this, that okay, you deploy, you say only 15, we will also have only 15 and no licensing required, we will manage, right? Okay, sir. But as an employer, it is always good to have contractors who have their own license, so that they will be responsible for their people. Otherwise, all responsibility will come to principal employer in case of any eventuality. Contract workers must be directed by contractor and not by principal employer. Okay. So licensing of contractor, chapter 4 talks about it. Every contractor have to obtain the license if employing more than 20 or more than 20 workers, and deposit required fee. Form number 4 is something which is an application for obtaining license. Form 5 is a certificate which an employer issues, to the contractor. तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपके यहाँ आदमी लगाने हैं तो उसको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए वो फॉर्म 4 में अप्लाई करेगा. Now it is all online, so all the applications are online, but the process is that employer will issue form 5. So form 5 is a document which says that I want to hire Messrs XYZ for these XYZ services. And throughout the year, the maximum number of people that I'll have will be X. Or I'll take N contract workers, 200, 500, 1000 contract workers. I will hire 500 contract workers from Messrs XYZ who will be deployed in loading, unloading, housekeeping, cleaning work of my premise. Okay. Their working hours will be as per normal shift. So this is one letter, form 5 is issued to contractor who, in order to obtain license, will submit this form 5 along with form 4 to get the license. Okay. Now what this license will have, it will have hours of work, fixation of wages, and other essential amenities in respect of contract labor. Each license is valid for 1 year and it is renewed every year. ठीक है, तो 11वें महीने में उसको आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा 30 दिन से पहले, और 1 महीने में रिन्यू होगा. Okay, sir. It's not transferable. Contract labor should not exceed on any day on the maximum number specified in the license. Wages, hours of work, and other condition of services must be mentioned in the license. Notify any change in number of workmen or condition of services. Right. So these are the terms and condition of license, labor license. Any contractor who is deploying contract labor is liable for these facilities for its contract labor. Now these are same or similar to what we studied in Factories Act. Chapter 3, 4, 5. Yes. Yes, sir. Health, welfare, safety, all these things we studied there, right? So Yes, in sir. welfare section, we studied canteen, restroom, latrine, washroom, and all these things. So a contractor is liable to provide all these facilities to its contract workers. Now, if the contractor fails to provide, it is principal employer who will be liable to provide the same. Okay. तो जहां 100 से ज्यादा लोग हैं वहां कैंटीन होना चाहिए. ओके, डाइनिंग एरिया होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए. तो ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है. अगर कॉन्ट्रैक्टर ये सब नहीं करेगा तो किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, जिसने उस कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया. ओके. नाउ वेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट लेबर नंबरिंग. जी बोलिए. No, sir. Okay. So wherein contract labor numbering 100 or more is ordinary employed. Ordinary मतलब वही किसी भी दिन पिछले 12 महीने में. One or more canteen shall be provided, restroom, the wholesome drinking water, latrines, urinals, and washing facilities has to be provided. Sir, will the principal employer charge anything from the contractor for this? I mean, for the Okay, services that you can read in this section 20. Your question is very apt. If any amenity required to be provided
not provided by the contractor shall be provided by the principal employer, right? All the expenses incurred by the principal employer in providing the amenity may be recovered from the contractor, right? So principal employer can recover it from the contractor if he feels it is right to be done. Clear? Got it, sir. Yes. So हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए कैंटीन बनाना है, आपने एक बना दिया, आप बोलो कि इसका जो भी खर्चा है मैं 12 महीने आपके बिल में से एडजस्ट कर लूंगा. You may recover. Choice depends. Choice lies with principal employer to do so, either by deduction from any amount payable to contractor or as a debt payable to the contractor. तो आप कहीं एडजस्ट कर लेंगे या उसको डेबिट नोट इश्यू कर देंगे और बिल के सामने सेटल करेंगे. ठीक है ना? So it can always be recovered from the contractor. Now, what this welfare provision says, the act and rule, things may vary from state to state sometimes. Canteen, restroom, crèche. For crèche, it is 30 or more if you see the Factories Act. The rule says 20 or more. Drinking water, latrine and urinal, one, at least one latrine for every 25 male or female contract labor separately. Washing facility and first aid, at least one first aid box for every 150 contract laborers. Now this, you can refer different rules, either central rule or state rule if there is available, okay, to zero down on these numbers. But each provision will have some numbers attached to this, right? Okay, sir. Yes, sir. Responsibility of payment of wages, section 21. आपने जो आदमी रखे हैं उनको पगार वगार देना पड़ेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so किसकी जिम्मेदारी है? Contractor. Contractor की. So contractor shall be responsible for payment of wages to each worker employed by him. ठीक है? Shall be paid before the expiry of such period as may be prescribed. तो सच मतलब कोई भी डेट जो कायदे में लिखा हो, या तो इसके रूल में या किसी दूसरे एक्ट में. तो इसमें इन करंट सिनेरियो इट इज बिफोर 10th of every month. इसका जो रूल है उसमें लिखा है कि बिफोर 10th of every month it has to be paid. दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर. अगर 1000 से कम है तो 7 तारीख, 1000 से ऊपर है तो 10 तारीख. So before 10th of every month the wages has to be paid. No wage period shall exceed 1 month. 1 महीने से ऊपर मतलब आप किसी का वेज रोक के नहीं रख सकते. 2 महीने का साथ में दूंगा नहीं चलेगा. Every month you have to pay. So wage period shall not exceed 1 month. The wage of terminated worker shall be paid before the expiry of 2nd working day from the day on which his services were terminated. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसने छोड़ दिया, आपने टर्मिनेट कर दिया, तो 2 दिन में उसका हिसाब करना होगा. Okay, it has to be paid directly or to any person authorized by him. Now, when this wage is paid as a principal employer, what is the responsibility? That it is paid in front of an authorized representative of the principal employer. तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कोई आदमी भी वहां हाजिर होना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को या लेबर को पेमेंट करता है. खैर अभी के सिनेरियो में कैसा हो गया, अभी कैश ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो गए है ना. नाउ देयर इज नो मोर कैश सैलरी, इट इज नाउ डायरेक्ट ट्रांसफर. तो सीधा अकाउंट में चला जाता है पैसा फॉर एनी काइंड ऑफ वर्कर्स. ओके, even the contractor will also generally transfer the money to contract workers account, majority of the cases. Okay, so in that case it may happen that none of the principal employer's representative is present there, but he will collect the receipt. बैंक स्टेटमेंट जो आपने ट्रांसफर किया उसका एक रिसिप्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर will always keep, just to ensure that whatever payment he has made is paid to contract workers. Correct.
डिस्प्ले ऑफ नोटिस शोइंग द वेज पीरियड, मतलब कब से कब तक का सैलरी मिलेगा. All registers to be maintained by contractor. Wages to be paid without deduction except those permissible under Payment of Wages Act. Payment of Wages Act में जो deduction लिखे हैं, your statutory deductions, PF, ESIC, professional taxes, etc. उसके अलावा आप कोई भी deduction करोगे नहीं, उसके बिना ही आपको वेज पे करना होगा. अगर उसने लोन लिया है तो भी 20% से ज्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए. उसका जो वेज है उस वेज का 20% ज्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए. एंड पेमेंट टू बी मेड ऑन वर्किंग डे. दिस इज बिकॉज इट वाज कैश पेमेंट अर्लियर. Principal employer will ensure that the payment has been made properly. Contractor fails to make the payment, principal employer will have to do it. Okay. Principal employer will be liable for all statutory payments. तो अगर प्रोविडेंट फंड जमा नहीं किया, प्रोफेशनल टैक्स नहीं भरा, ESIC पेमेंट नहीं किया, उस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है. But in new code, the responsibility will be equally shared between contractor and principal employer. So the contractor himself will be an employer. Therefore, all the risk which a principal employer carries today would be carried by the contractor. So if an inspector comes and checks that, okay, iska PF nahi bhara hai, then as a principal employer, you may tell that boss, contractor himself is an employer. You please check with them. Okay. Okay, sir. Now, what are the registers and forms to be maintained? So, form number 12 to 29, register of contractor. Form number 12. This is a principal employer who maintains कि आपके यहाँ कितने contractor आपके यहाँ deployed हैं. Register of person employed, employment card, that is ID card, service certificate, that is separation, master roll, employee master, register of wages, कब किसको कितना payment दिया, wage का master roll whether fortnightly or less, register of deduction, register of fine, register of advances, overtime, and wage slip. So all these are the registers that a principal employer or a contractor has to maintain under this particular act. Returns are nothing but the MISs. Okay, the report that you submit to the competent authority. Okay, yeah, appropriate government. So labor commissioner in this case. There is annual return form 25. In form 25 in duplicate, principal employer by 15th Feb of every year. It is annual return and half yearly return form 24. Okay, now it became only one form. Form 24 and 25 will be common for both employer and employee. I mean employer and contractor. So can you explain it once again? I didn't get the annual or एनुअल रिटर्न मतलब आपको एक रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को सबमिट करना है, ठीक है, टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सो इन दिस केस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज लेबर कमिश्नर. ओके, सो यू हैव टू सबमिट वन एनुअल रिपोर्ट. सो इन दिस लीगल टर्मिनोलॉजी वी कॉल हिम एनुअल रिटर्न. ओके, जैसे इफ यू रिमेंबर इन फॉर्म इन बोनस एक्ट there was one annual return form D which was a declaration कि हमने इतना bonus disperse किया है, right? So here in this case there will be two returns, one will be annual, one will be half yearly. So form 24 and 25. So form 24 and form 25 are what? They are the formats. They are the formats in which you have to specify all the details and submit to the labor commissioner or appropriate government by 15th Feb in case of annual return. Okay, and after within 30 days from the half year. Okay. Okay. So the definition of year will be there in the act. So I again, we were talking about accounting year in the payment of bonus act, calendar year in case of factories act. So here also Yes, sir. calendar year or accounting year. So in calendar year के हिसाब से 6 महीने में, so September and February, these can be 2 months wherein you will have to submit these reports, and these reports are known as returns. जैसे हम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं ना,
Yes, इनकम sir. टैक्स का IT रिटर्न भरते हैं. तो रिटर्न इज व्हाट? इट इज अ रिपोर्ट wherein you are providing certain information to different government departments. So in this case, for this act, there are two returns are filed in annual form 24 and 25. Now I think these are amalgamated in a single form, and there's only one form which employer and contractor both fills. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो सकता है आपके यहाँ 20 से ज्यादा लोग हों या कोई काम ऐसा हो जहां आप चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर को डिप्लॉय करना, या आपने किया है, लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि नहीं भाई ये गड़बड़ है और यहाँ हैं, in that case by notification they can prohibit the deployment of contract labor in any establishment, in any operation, process or other work. तो अगर सरकार को लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर, या आपके पास परमानेंट लेबर ही होना चाहिए, you cannot have contract worker, in that case the appropriate government can prohibit. ठीक है? Okay, sir. Now one need to be very cautious when you are hiring or abolishing the contract labors. The reason being, as we were talking about permanency, so in many cases it happens that the contract labor may claim the permanency. We are also like permanent worker. There are many cases that have happened wherein court has to give judgment. Honorable court has said that okay, these workers cannot be a contract worker, but should be on the roll of the company or like normal workers. So the abolition is contractor gets eliminated and so does the contract. Contract labor does not automatically become direct employees of principal employer. Okay. अगर वो एबोल्यूशन हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उन सारे लोगों को एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा. लेकिन अगर ये साबित होता है कि जो भी वर्कर है वो वर्कर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सीधे दिशा निर्देश पर काम कर रहा है और एक लंबे समय से काम कर रहा है और वही काम कर रहा है जो उस कंपनी के बाकी वर्कर जो रेगुलर हैं वो भी कर रहे हैं, in that case honorable court may direct establishment or employer to make these contract labors permanent. If the labor commissioner comes to know that the contract between establishment and contractor is a sham contract. Yeah, Shakti. Sir, I want to know that in how many days that a company or a government can know about that we are permanently go for that labor. Sorry, फिर से बोलो. I want to know about that how many days we are confirmed that we take a contract for a permanent any labor. How many days? Yes, sir. No, there is no such definition about days. Okay, if we read the definition of incidental or seasonal work that has been defined. So if any work which is not incidental to or of seasonal nature, then you cannot have a contract worker. So if any work is happening on all 365 days, and in that work, if both the contract and permanent workmen are deployed, in that case, the commissioner may direct or honorable court may direct the establishment to absorb all these contract workers as their permanent workers. ऐसा कोई number of days का कोई clause नहीं है. इतने दिन काम करने के बाद वो permanent हो जाएगा. Okay, sir. So a contract labor will remain a contract labor. Okay, irrespective of his period
However, if the same worker continues for a very long period of time on the same job role by the same contractor, then it is, it is implied that he is as good as a permanent worker and he can claim the permanency. Okay. 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 Another thing is, if the provident fund, if the PF account of contractor and the PF account of principal employer is also same, in that case also it may be considered or termed as it is a sham contract and the contract laborers are similar to the permanent workers. So is there any specified number of contract employees who can be termed, later turned into permanent employees? No. No. There is no number. There is no such number. Okay. And it is written that it is not that by default you will be absorbed after a certain period of time. No. So what is the criteria Or for converting a no. See, if contract labor gets preference for employment with principal employer subject to their meeting the employment requirements. अगर इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ये मेरे यहाँ अभी काफी टाइम से काम कर रहे हैं, इनका स्किल सेम एज परमानेंट वर्कर, मुझे इनकी आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसको एज ए कंपनी रोल या परमानेंट एम्प्लॉय परमानेंट वर्कर के तरह से ले सकता हूँ. देयर इज नो क्राइटेरिया कि लेना ही पड़ेगा. देयर इज नो ऑब्लिगेशन विद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू एब्जॉर्ब एनी और एवरी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर. Okay. But as you see the fourth point, the displaced contract labor can still raise in dispute, claiming that contract was sham and they were always the direct employee of the principal employer. अगर सब कुछ सेम था, परमानेंट एम्प्लॉय का और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बीच में सब कुछ अगर सेम था, उनका काम, उनके वर्किंग आवर्स, पेमेंट, वेजेस, फैसिलिटीज, एवरीथिंग, okay, and the tenure also was very long, in that case he can claim the permanency if he is instructed or directed by principal employer. Right? Am I able to answer your question, Anamika? Yes, sir. ओके. कहाँ रख सकते हैं? हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, लोडिंग अनलोडिंग, मटेरियल मूवमेंट, कैंटीन एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी एंड विजिलेंस. ओके, ये सब ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई नहीं है, तो वहां आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को डिप्लॉय कर सकते हो. बट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, लाइन पे, असेंबली में आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को डिप्लॉय नहीं कर सकते. ओके. सो टेक्निकली जो टेम्पररी काम है, जो शॉर्ट टर्म काम है, ये जो ऐसे काम है जो डायरेक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, वहां आप कर सकते हो. Certain cases that you can refer is Gujarat State Electricity Board versus Union of India 95, Air India Statutory Corporation versus United Labour Union and others 1996, SAIL versus National Union of Waterfront Workers 2001. ये कुछ केसेस हैं जो I suggest you to refer on Contract Labour Regulation and Abolition Act. Right? Some some cases, some scenarios, I'll leave it with you. There are 3-4 such scenarios which I'll ask you to read post this session. Okay, think on the answers. So this becomes an assignment. Think on the answers of this and we will discuss in the next class as well, or in between. Can you please show the previous slide, like previous to previous one, where you had the cases? Sorry? So the previous to previous one, which had Gujarat and the cases which had taken place. Yeah. Yes, this one. 1 second, sir. So I'll share this presentation as usual. That's okay. Okay.
So these questions, what is the advantage and disadvantage? Is there any minimum wage for contract labor? Does one have to provide PF, ESIC leave, gratuity for contract workers? To me, yes, everything has to be provided, right? Everything is, principal employer and contractor is liable for all these statutory payment, whether it is a part-time contractor worker, contract labor, regular. Next comes Industrial Employment Standing Order Act 1946, 15 sections, 23rd April 1946 enacted. Now this was related to the working environment, the working condition of the सर्विस. कब तक नौकरी कर सकता है, किस तरह से काम करेगा, क्या उसके अधिकार हैं, स्टैट्यूट में क्या प्रोविजन है, वर्कर कौन, टेम्पररी वर्कर कौन, कैजुअल वर्कर कौन, बराबर. सो ये कुछ जो है आपकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, योर लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द एग्रीमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एक्ट. क्या नाम है एक्ट का? द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट. This talks about condition of service. Okay, sir. क्यों लाया, इसका जरूरत क्या था? There was no uniform practice governing the condition of service. कोई 50 में रिटायर कर रहा है, कोई 55 में कर रहा है, कोई 58 में कर रहा है, कोई 65 तक नौकरी में रख रहा है ना? कहीं छुट्टी है, कहीं नहीं है, कहीं हफ्ते में 10 दिन काम हो रहा है, कहीं 6 दिन काम हो रहा है, कहीं काम ही नहीं हो रहा है. फिर स्टैट्यूटरी कंडीशंस क्या है, ये होना ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अगर कुछ शैतानी है, कुछ मिसकंडक्ट है तो क्या प्रोविजन हो सकते हैं, पनिशमेंट कैसे अवॉर्ड करेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स वर रिलेटेड टू सर्विस कंडीशन. तो 1927-28 में बॉम्बे कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स ने स्टैट्यूटरी सर्विस कंडीशन का डिमांड किया और 1938 बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें पहली बार स्टैट्यूटरी स्टैंडिंग ऑर्डर का प्रावधान था. ओके, 1948 का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1938. तो जहां पहली बार वर्किंग कंडीशन, सर्विस कंडीशन के बारे में बात हुआ. फैक्ट्रीज एक्ट बात करता है वर्किंग कंडीशन के बारे में, साफ सफाई हो, सुरक्षा हो, हेल्थ हो, हाइजीन हो, वगैरह वगैरह. यहाँ आप कैसे ऑपरेट करें. सो दैट इज मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर. We call it as a model standing order also. So the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. What is the object? Object is define the condition of work, uniformity in terms and conditions of employment. मतलब एक तरह की इंडस्ट्री में एक तरह का वातावरण हो, कहीं 12 घंटे काम हो रहा है, कहीं 8 घंटे काम हो रहा है, कोई 6 घंटे करा रहा है ना. पहले बैंक में कैसा था, 11 बजे खुलता था, 3 बजे बंद हो जाता था. छोटी कंपनी तो क्या करेगी, 12-12 घंटा काम करेगी. मल्टीनेशनल कंपनी तो बोलेगी नहीं, मेरे 5 घंटे काम करेंगे तो बहुत हो गया. सो एवरी कंपनी, if it is possible, they will exploit the workers. Okay, at some places even at the age of 70 people are working. तो एक पैर कवर में केले के छिलके पे फिर भी आप काम पे आ रहे हैं. Okay. But then at other place, at the age of 45, 50, they say, okay, you are old enough not to come to office. Or for certain areas, you have different practices. So in such case, it was necessary to have an act that will talk about the condition of services. So the Industrial Employment Standing Order Act. Uniformity in terms of condition of employment, minimal industrial conflicts, harmonious relationship between employer and employee, मालिक और कर्मचारी के बीच में एक अच्छा संबंध बना रहे. To provide statutory sanctity and importance to standing order. मतलब कुछ बेसिक दिशा निर्देश बनाने, बेसिक दिशा निर्देश को लागू करने के लिए एक स्टैट्यूट की जरूरत थी, कानून की जरूरत थी. Therefore this act.
Now applicable, it is applicable to whole of India. Establishment wherein 100 or more workmen are employed on any day preceding 12 months. कहाँ लागू होगा? जहां 100 लोग काम करते होंगे या कभी भी किसी एक दिन काम किया होगा, उस सभी establishment में it will be applicable. Okay, in certain state it is compulsory to have your own standing order. In certain state you are abide by the model standing order. तो आप जब गूगल करेंगे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर तो यही एक्ट सामने आएगा, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 and then the rules. So extend to whole of India, establishment where 100 or more workmen. In certain state it is irrespective of the number of workmen, this act is applicable. एक हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, this act is applicable. Okay, the central act says 100 or more. The state act can have a different scope, right? Is it clear? Yes, sir. Hima, Prachi, Ruchi, Vishakha, Shakti, Yes, sir. Akriti, Yes, sir. Yes, sir. सब हो ना? Yes, sir. Another thing is once applicable, always applicable. आज आपके यहाँ 99 लोग हैं, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. कल आपके यहाँ 101 लोग होगा, ये एक्ट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गया. परसों अगर 101 में से 2 निकल के 99 भी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये एक्ट फिर भी एप्लीकेबल रहेगा. तो एक बार एप्लीकेबल हो गया तो ऑलवेज एप्लीकेबल irrespective of number of employees. Correct? Okay, sir. Yes, sir. Same thing is with bonus, same thing is with other acts also. तो जब तक आप प्रोविजन में नहीं है तब तक ठीक है. प्रोविडेंट फंड, even the PF, once applicable, always applicable for employer. So and what employee. if? Yeah, Ruchi? Hello. हाँ. Yes, sir. What standing order से कितने लोग होते हैं तो we need standing order for one company? I think for Gujarat it is compulsory for any number, though Central Act says 100 or more. It's only after more than 100 only, sir. 100 or more. But I remember, sir, when I was working with other organization, there were only 20 staff, but they were also having standing order. No, there is one model standing order. There is one model Okay. standing order. Okay, which is this act itself. But the state rule may vary on the applicability. It does not say that if you are having less than 100, you cannot have. Okay. Okay, so if you want your own standing order Okay. to be, to be used, you get it approved and you can use it even if it is less than 100 people. Okay, understood, sir. But if it is 100 or more, it is mandatory. It's mandatory. Understood, sir. Thank you so much, yes, sir. Okay. Now, any government, any appropriate government can exempt any establishment from any of the provision of this act. तो अगर लेबर कमिश्नर को या किसी को लगता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी एस्टेब्लिशमेंट पे ये एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो उसको एग्जाम कर सकते हैं. अगर उनको लगता है कि कहीं लगाना है तो लगा भी सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. इट अप्लाइज टू रेलवेज, फैक्ट्रीज, माइन, क्वेरी, ऑयल फील्ड, tramways, motor service, dock, plantation, workshop, civil construction and maintenance work, which means it is applicable to all sectors almost. किसको लागू होगा? सस्ता सीएम को, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजर, टेक्निकल, क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सब पे ये एक्ट लागू होगा. तो अगर हम 100 की बात करते हैं तो ये सब मिला के 100 है तो भी ये एक्ट लागू हो जाएगा. एंड apprentice are also included. Apprentice are special category of people who are employed under the Apprentice Act 1961. ITIs, diploma, engineer, management trainee who are registered apprentice, okay, under the
Apprentice Act 1961, they are also included in this particular act. In other act, it is not mentioned, but in this act it is mentioned. तो सर्विस कंडीशन तो उनको भी लागू पड़ेगा ना. अप्रेंटिसेस का मतलब थोड़ी कि चूस लोगे उसको. If he is an apprentice, it doesn't mean that you will exploit him or her. So these condition of services will be applicable to apprentice as well. So अगर आप बाकी लोगों को छुट्टी दे रहे हैं तो उसको भी छुट्टी देना पड़ेगा. बाकी लोगों के लिए लंच ब्रेक है तो उसके लिए भी लंच ब्रेक होगा. बाकी लोगों को पेड हॉलिडे है तो उसको भी होगा. बाकी लोगों के लिए अगर वर्किंग आवर्स फिक्स है तो उसके लिए भी होंगे. ठीक है ना. So applicable to this also. Appropriate government is state government and central government. Certifying officer. Certifying officer is someone who will certify your standing order. आपने आपकी कंपनी या काम के हिसाब से within the periphery of the act कुछ कायदे बनाए हैं जो आप लागू करना चाहते हैं आपकी इंडस्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में, उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा. So that certifying officer is labor commissioner, regional labor commissioner, and include any other officer appointed by appropriate government. Now, appropriate government can be state government या central government by notification in the official gazette to perform such duties. तो लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, अगर ये दोनों नहीं है तो कोई और होगा आईएएस रैंक का अधिकारी जिसको गवर्नमेंट डिप्यूट करेगी एज ए सर्टिफाइंग ऑफिसर. एम्प्लॉयर वी नो, ऑक्यूपायर, ओनर, someone who is in the capacity to manage the plant or the factory operations. Factory as per Factories Act, railway as per Railways Act, establishment as defined in Payment of Wages Act 1936. तो Payment of Wages Act में establishment का जो definition है वही यहाँ भी applicable होगा. Standing order means rules relating to matters set out in the schedule of the act. इस एक्ट में एक शेड्यूल है, 15 सेक्शन. उस शेड्यूल में लिखा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टैंडिंग ऑर्डर में आएंगी. हम देखेंगे. ठीक है. तो वी विल सी द शेड्यूल 1 आल्सो ऑफ द एक्ट. नाउ व्हाट इज द शेड्यूल? शेड्यूल मैटर्स टू बी कंटेन्ड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, टेम्पररी है, कैजुअल है, अप्रेंटिस है, परमानेंट है, वगैरह वगैरह. That is to be mentioned in the standing order. Manner of intimating to workmen. Workmen को आप किस तरह से सूचित करेंगे? The communication. Shift working, कितना शिफ्ट होगा, कितने आवर्स का शिफ्ट होगा, ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा, शिफ्ट वर्किंग. अटेंडेंस एंड लेट कमिंग, तो उसका लीव एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट. कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर इन अप्लाइंग फॉर एंड द अथॉरिटी विच मे ग्रांट लीव एंड हॉलीडेज. तो कितना छुट्टी, कितना पीएल, कितना पेड हॉलीडेज, वगैरह वगैरह. देन सस्पेंशन और डिसमिसल फॉर मिसकंडक्ट. अगर कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कमैन कुछ गड़बड़ करता है और आपको उसको कुछ पनिश करना है, ओके, तो कौन से मिसकंडक्ट है, कैसे पनिश कर सकते हैं, क्या प्रोविजंस है, दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन दिस एक्ट और द शेड्यूल. ठीक है. So if there is someone who found asleep, काम की जगह पे सोता हुआ पाया गया during working hours, is it a misconduct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या करना चाहिए? Take required actions. They should be Sorry? given warning letter or something like. Yes, तो क्या करना चाहिए? That is called disciplinary proceedings. Okay. और किस केस में करना चाहिए उसके लिए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा या रूल पढ़ने पड़ेंगे. सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट वेरियस मिसकंडक्ट्स. आई थिंक इट इज इन गुजरात रूल. ठीक है. So we will see what are the different misconducts. Okay. Now how to do this? अगर आप मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपना बनाना चाहते हैं, तो प्रोसेस इज यू हैव टू मेक द स्टाफ स्टैंडिंग ऑर्डर इन 5 copies
furnish 5 copies to the certifying officer. जो अभी हमने बात किया, कमिश्नर, लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर. Okay. Yes, sir. Now he will endorse it. He'll make any suggestion or remark which to be required. Once it is done, the status has to be informed to the trade union. And once the certifying officer certifies this, that act, the model standing order, the standing order will be applicable to the establishment. वो 5 कॉपी किसको किसको भेजना है वो भी एक्ट में डिफाइन किया है. ठीक है ना? Okay, sir. Procedure for certification: copy of draft to be sent to trade union workmen. Opportunity of hearing of trade union workmen to be provided. Then certification: certified standing order have the force of law and the violation of any provision shall be taken action. Standing order to be applicable to all present and future workmen. Standing order must confirm the model standing order. मतलब एक्ट के बाहर नहीं होना चाहिए. एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उसकी पेरिफेरी में ही रह के आपका स्टैंडिंग ऑर्डर काम करेगा. ठीक है ना? तो आप जब ड्राफ्ट करेंगे तो आप सबको बताएंगे, सबसे सलाह लेंगे, पूछेंगे, उसके बाद ही सर्टिफिकेशन के लिए जाएगा. और एक बार सर्टिफाई हो गया तो सारे एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल है. और उसमें कुछ भी वायलेशन अगर किसी एम्प्लॉय ने किया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है. राइट? Right, sir. Yes, sir. Sir, this also implies on contract labors as well. Yes. So in one of the previous slides, it was mentioned that regarding the kind of this thing employee. So it was mentioned temporary, casual, and one more and the permanent ones. So what is the difference between casual and permanent? Permanent is someone who is there for 365 days, directly employed on the process of manufacturing. Okay. Casual is someone who is not directly employed on any permanent work, but some work which is very casual in nature. Okay. I suggest you explore the definition of various types of employees. It becomes an assignment. So contract labor, permanent, casual, temporary, dihadi, daily wages, fixed term employees. So what are the different types of employees? That will be a question. Okay, and then you will find out the definition of these types of employees from various acts. So you can refer Factory Act, you can refer Contract Labor Act, you can refer Industrial Dispute Act, you can refer Model Standing Order. Okay, so far we use the term employee or workman. Okay, but the type of workman, type of employees, type of employment. So that you just try to find out what are the different types. Okay, and then we can subsequently discuss also sometimes. Okay. Okay, sir. Okay, now section 14 of central rule talks about disciplinary action for misconduct. तो कौन-कौन सी चीजें हैं जो misconduct में आती हैं? A workman may be fined up to 2% of his wages in a month. If it is suspension, you cannot suspend anyone exceeding 4 days at a time. Okay, a workman may be suspended for a period of not exceeding 4 days at a time, or dismissed without notice or any compensation in lieu of the notice if he is found to be guilty of misconduct. The following act
and omission shall be treated as misconduct. कौन कौन सी चीजें मिसकंडक्ट में आएंगी? Willful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with others, to any lawful and reasonable order of a superior. Willful insubordination मतलब जानबूझ के कहना नहीं मानना। बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटे पढ़ते ही नहीं, है ना? हम नहीं पढ़ेंगे, खा लो, हमें नहीं खाना। एक दिन डांट दिया पिताजी ने, शाम को खाने में ना नहीं खाना। विलफुल इनसबऑर्डिनेशन, जानबूझ के कहना नहीं मानना, ठीक है? या तो अकेले या इन कॉम्बिनेशन। लाहौर में 2 भाई बहन है छोटे, उनको भी पहला फुसला के अपने हाथ कर लिया। मैं तो नहीं खाऊंगा, तुम लोग मत खाना, खबरदार खाना खाने गए तो। आज अपन सब मिलके पापा जी को ठीक करते हैं, आज इनको सुधार देंगे, है ना? ऐसा सोच के सब एकदम मिली भगत। दैट इज विलफुल इनसबऑर्डिनेशन, जानबूझ के कहना नहीं मानना। थेफ्ट, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, चोरी किया, घपला किया, कुछ बेईमानी किया। विलफुल डैमेज टू और लॉस ऑफ एम्प्लॉयर्स गुड्स एंड प्रॉपर्टी, जानबूझ के मालिक की चीजों का नुकसान किया, तोड़फोड़ कर दी। पापा ने सुन रहे, घड़ी छुपा दी, मम्मी नहीं मान रही तो बेलन तोड़ दिया। मुझे रोज इसी से पिटते थे, आज इसी को तोड़ देते हैं। विलफुल डैमेज और लॉस ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, गाड़ी के टायर में पंचर कर दिया, आज जाना नहीं स्कूल, तो डैमेज और लॉस। टेकिंग और गिविंग बाय और एनी इलीगल ग्रेटिफिकेशन, किसी के पास से पैसा लेना या किसी को पैसा देना, ओके? अगर पकड़े गए तो, ये लेन देन तो होता होगा, पकड़े गए तो मिसकंडक्ट है ना? स्कूल में प्रोफेसर को बोल दिया, सर पार्टी प्लीज पास कर देना, तो सबने पास कर दिया। बाद में आपने पार्टी दिया, पकड़े गए कि बोले पार्टी क्यों? पास करने के लिए, पेपर में कुछ लिखा नहीं था, फिर भी 35। So that is bribe, illegal. It is misconduct. Habitual absence without leave or absence without leave for more than 10 days. अक्सर अनुपस्थित रहना बिना इजाजत के या लगातार 10 दिन से ज्यादा बिना इजाजत के एब्सेंटिज्म इज ए मिसकंडक्ट। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, रोज देर से आना, मिसकंडक्ट है ना? हैबिचुअल ब्रीच ऑफ एनी लॉ एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट, जानबूझ के आदतन कंपनी में कुछ नियम बने, हम उसको मानेंगे नहीं। मोबाइल लेके नहीं आने का, कहीं ना कहीं छुपा के ले आए, कभी खीसे में रख लिया, कभी पैंट में रख लिया, टिफिन में रख के ले आए, है ना? आप यहाँ चेक करोगे, टिफिन कौन चेक करता है? तो प्लास्टिक की थैली में रख के, रोटी के बीच में रख के, मोबाइल ऑफिस में प्लास्टिक में लेमिनेट किया, पानी की बोतल में रख के ले आए। पानी बोतल कौन चेक करता है? राइट? सो अगर ऐसा पता चला बार बार ऐसा हो रहा है, 2-3 बार पकड़े गए, तो सजा माफी नहीं है। राइटियस और डिसऑर्डरली बिहेवियर, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, मारामारी, नेतागिरी, लीडरशिप, चिल्ला चिल्ली, राइटियस और डिसऑर्डरली बिहेवियर। हैबिचुअल नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट ऑफ वर्क, काम दिया कर ही नहीं रहे, आदत से जानबूझ से खराब काम कर रहे हैं, जानबूझ के कम काम कर रहे हैं। ऐसा काम करो कि अगली बार कोई काम ही ना दे, है ना? घर में पापा मम्मी काम बोल दें, उनको ऐसा करके दो, बाबा तुम रहने दो, अगली बार से मैं खुद ही कर लूंगा। तुमको काम बोला, पाप हो गया। रोटी बेलने को बोला, एक दिन इतना आड़ा टेढ़ा बेला, मम्मी बोले रहने दो भाई, मैं खुद ही कर लूंगी, कल से तुम एहसान मत करो। हैबिचुअल नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट ऑफ वर्क, तो घर पे तो बच जाओगे, ऑफिस में नहीं बचोगे, निकाल के बाहर कर देंगे। फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन, स्ट्राइकिंग वर्क और इंसाइटिंग अदर्स टू स्ट्राइक वर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, काम बंद करो, हड़ताल करो, मत करो, है ना? कि सबको बहकावे में लेके ये सब किया। ऑल दीज आर मिसकंडक्ट्स, दे कैन बी इवन बियॉन्ड दिस, है ना? Yes, sir. All these will form the misconduct. इसकी सजा है, क्या सजा है इसका? डिसिप्लिनरी प्रोसीजर से। किसी को भी ऐसे निकाल के बाहर
नहीं कर सकते, है ना. देयर इज वन थिंग कॉल्ड लैंड ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. 100 बेगुनाह भले छूट जाए लेकिन 100 गुनहगार भले छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, है ना. ऐसा बोलता ना जॉली एलएलबी. यस सर. 100 गुनहगार भले छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए. तो ऐसा दिस इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस कि भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, गुनहगार भले छूट जाए एक आध बार, ठीक है ना. तो उसी तरह से यहाँ भी है. तो आप ऐसा नहीं किसी को भी कल एक दिन लेट आया बोला कल से मत आना, मैं फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, निकल के बाहर कर दिया, सीधा कोर्ट में जाके केस कर देगा, पूरी जिंदगी तुमको लड़ना पड़ेगा. करेक्ट. तो वो एक दिन लेट आया, तुम्हें रोज लेट आना पड़ेगा ऑफिस, और उस चक्कर में लेट भी हो सकते हो. मतलब नाम क्या क्या लग सकता है. वो जब जज खड़ा कर देगा अपने सामने तो एक आध दिन लेट श्री हो जाएंगे. श्री रोज लेट होते थे ऑफिस में, आज लेट श्री हो गए. So what is the process? The process is first you will have the preliminary inquiry. कोई भी घटना अगर सामने आती है तो पहले उसकी प्राथमिक जांच होगी, है ना. तो 2-4 लोगों से 10 लोगों से पूछोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, just to get the sanctity of that act. ठीक है. इसने झगड़ा किया तो कहाँ किया, किससे किया, कैसे किया, कब किया, किसने देखा, कौन गवाह, कौन सबूत, ये सब एज ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आप करोगे. उसके बाद ये सारा पूछताछ करने के बाद में यू विल इश्यू ए चार्ज शीट. चार्ज शीट मतलब तुमने इस दिन इतने बजे इस आदमी से ये बात की, दैट इज चार्ज शीट, है ना. न्यूज पढ़ते हो, सुनते हो, न्यूज सुनते हो ना. यस सर. तो एनसीबी ने Yes, sir. 400 पन्ने की चार्जशीट फाइल की, या कोर्ट में इसके खिलाफ 400 पन्ने की, 500 पन्ने की, 1000 पन्ने की चार्जशीट दायर की गई. तो चार्जशीट इज उस मामले में जितने भी लोग शामिल थे उन सबके खिलाफ क्या क्या अपराध है उसकी पूरी डिटेल, दैट इज चार्जशीट. ओके. एंड दिस विल आल्सो हैव समटाइम्स अ शो कॉज नोटिस दैट ओके तुम्हारे ऊपर ये सारे गुनाह हैं, अब ये बताओ तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए. तुम्हारे खिलाफ खून का इल्जाम है, फांसी देनी चाहिए, लेकिन बताओ कि तुम्हारे खिलाफ क्यों फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए. तो बोलेगा साहब मजाक मजाक में खून कर दिया, ऐसा कोई इरादा नहीं था, है ना. ऐसे उसने बोला मार के दिखाओ कैसा लगता हूँ, तो मैंने चक्कू डाल दिया, मेरा ऐसा कोई मर्डर करने का इरादा नहीं था. नो इंटेंशन टू किल बट समहाउ इट हैपेंड, है ना. सो इन चार्ज शीट ही विल गिव द शो कॉज, क्यों करना है. So the charge sheet, each charge should be clearly specified. This is very important document, charge sheet, in any disciplinary proceedings. There should be a separate charge for each allegation, and charge should not relate to any matter which has already been decided upon. The charges so framed should be communicated to the individual along with the statement of allegations on which the charges are based, with each and every fact. कोई assumptions नहीं, मैंने सुना है तुमने ऐसा किया, नहीं. उस आदमी ने बताया कि इस तारीख को इतने बजे तुम कंपनी में आए, तुमने फला आदमी को 2 घूंसे 1 लात मारी और ये गाली दी. राइट. एवरीथिंग हैज टू बी explicitly mentioned in the charge sheet for which he can defend. Sometimes the language, if it is not understood, किसी ऐसे आदमी को साथ में रख के आपको चार्ज शीट इश्यू करना पड़ेगा जो उसको समझा सके. ठीक है. जनरली इट हैज टू बी इन द लोकल लैंग्वेज so that the person can understand. Okay, so it has to be in understood language. Then what will happen once the charge sheet has been framed, you can suspend someone. अब उसको बोलोगे कि जब तक इंक्वायरी नहीं होती है तब तक तुम सस्पेंड रहोगे. क्यों? हो सकता है कि वो इस इंक्वायरी को प्रभावित कर सके, है ना. कभी कभी जेल की जो सजा होती है ना, तो बेल के लिए लोग एप्लीकेशन करते हैं, जमानत,
है ना? Yes, sir. Yes, sir. अदालत जमानत खारिज कर देती है, पुलिस वाले बोलते हैं नहीं साहब इसको बाहर मत छोड़ो, इसको बाहर छोड़ेगी ना ये सारे सबूत नष्ट कर देगा, ये लोगों को गुमराह कर देगा, ये जो गवाह है उनको बरगला देगा, पैसा वैसा देकर खरीद लेगा, ये सारे गवाह हॉस्टाइल हो जाएंगे, हमारा केस वीक हो जाएगा, इसको सर एक छोड़ो मत। क्वेश्चन जी सर, बाय मिस्टेक उसके ऊपर मतलब वो जैसे आरोप लगा है, वो मतलब वो चीज वो किया नहीं है, वो बेगुनाह है और बाद में चल के वो प्रूफ होता है, तो उस केस में जिसने आरोप लगाया जिम्मेदारी उसकी है उस आरोप को साबित करने की। ओनर्स लाइज विद कंप्लेनेंट, जिसके खिलाफ हुआ है लेकिन उसका सर वो जिम्मेदारी साबित कम नहीं है। कर पाता है तो ऐसा नहीं होता ना, अच्छा। ऐसा नहीं होगा। विशाखा तुमने चोरी की है ऐसा मैंने आरोप लगा दिया, मुझे साबित करना है कि तुमने चोरी की है, मैं नहीं माखन खाए हो तो खाना को साबित करना है कि माखन नहीं खाया है। यशोदा नहीं साबित करेगी कि तूने खाया है, so there'll be an argument, there can be debate, so there'll be suspension pending inquiry, so you can suspend that individual if you think that ये सब चीजें हो सकती है, वो बीच में दखलंदाजी कर सकता है, चीजों को बिगाड़ सकता है। So the various circumstances which may warrant suspension of individual are when disciplinary proceeding is pending or contemplated, when engaged in the activities prejudicial to the interest or security of the state, वगैरह वगैरह। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कब कब हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं, या कोई ऐसा एक्ट है जहां मोरल वैल्यूज स्टेक पे है, करप्शन है, कोई सीरियस नेग्लिजेंस है, दारू पी के आ गया ऑफिस में, ऑपरेटर है दारू पी के आ गया, एक वाल इधर से उधर घुमा देगा पूरा प्लांट फट जाएगा। You can't allow such people. You have to suspend them. You can terminate also, but termination is a very serious punishment ना। Termination मतलब फांसी जैसा है, एकदम आखिरी काम एम्प्लॉयमेंट में, राइट? अच्छा, जब तक वो आदमी सस्पेंशन में रहेगा हमको उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस अलाउंस। क्या बोलते हैं? Subsistence allowance. जैसे पढ़ाई के पहले प्रिपरेटरी लीव होता है ना, तो उसको एब्सेंट नहीं माना जाता है, ऐसा यहाँ पे सबसिस्टेंस अलाउंस। तो आपको जो पगार मिल रहा है उस पगार का कुछ परसेंटेज, तो पहले 90 डेज में 50% और उसके बाद 75%। अगर आपका सस्पेंशन 3 महीना चलेगा तो आपको आपके वेज का 50% सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता रहेगा। मतलब आप काम पे भले नहीं जाएंगे, 50% पगार आपको मिलता रहेगा, है ना? So is this not a loss for the company? Because I mean, company is paying that person who might have some fault in that situation. It is not convicted, na? But so what if the result comes like that? He That's okay. is the culprit. Then some punishment can be awarded. So where you can have financial liabilities. 5 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना, आप इसको कवर कर लो, और whatever wages have been paid has to be recovered. That is all about the award of the punishment. But you cannot withdraw the right of an individual of livelihood. है ना? आप उससे उसके जीने का अधिकार तो नहीं छीन सकते ना। तो उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती रहे, उसके लिए 50% ऑफ द वेज फॉर इनिशियल 90 डेज, और उसके बाद भी अगर लंबा चलता है सस्पेंशन, सो इन दैट केस इट इज 75%। Got it, sir. Okay. So once it is done, then there will be notice of inquiry. Okay, inquiry means you will have उलट तपास, पूछताछ करोगे, दोनों को बुला के सारे गवाहों को जांचोगे, सारे साक्ष्यों को चेक करोगे, सबकी सुनोगे, and you will make a report. You will verify all the evidences. There will be a third party. Sometimes you may ask someone to do this inquiry for you. Domestic inquiry बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? Domestic inquiry. So you can employ an inquiry officer. You can depute an inquiry officer. Preferably, he will not be from the HR. Okay, he may, and it is always advised
to be a third person, so that without bias he would do the inquiry. So in this domestic inquiry, you will depute inquiry officer. You will see all these things in Industrial Dispute Act. So then you will issue the notice of inquiry to all the witness, victim, culprit, everybody, complainant, complainee, and all the witnesses. You conduct the inquiry. After inquiry, you will have the findings. है ना? सब पूछताछ की, मालूमात की, गवाहों से पूछा, तमाम गवाहों और बयानों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है. That will be the conclusion of your inquiry. कि मुलजिम सृष्टि राय बेगुनाह है. इन्होंने जो रोटी जलाई थी वो जानबूझ के नहीं जलाई थी, लेकिन गैस की आंच अचानक बढ़ गई, उस वजह से रोटी जल गई. So that is the finding. Okay, and then accordingly the punishment will be awarded. So अगर जानबूझ के किया है, गलती पाई गई, तो क्या सजा हो सकती है? डिसमिसल हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है ना, 5 साल, कुछ फाइनेंशियल जुर्माना हो सकता है, खाली वार्निंग देके छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, जो भी है. So award of punishment, and then whatever award you will do, that would be communicated to the parties affected or interested, right? Correct? So this was about these important aspects, the Labor Act and Standing Order. Okay. Yes, sir. I'll share this presentation. So there in that presentation, you will have all these details. I'll also have the link of the acts. You can download those PDFs. Okay. Malik and who else? It's a Kumar. Kumar. Konza Kumar? H.L. Kumar. H.L. Kumar. Yes, H.L. Kumar and Malik. इनका books आप refer कर सकते हो on various labor laws. There is one more document called LLR, Labor Law Reporter. LLR, Labor Law Reporter. ये I think दिल्ली से publish होता है. उसको आप subscribe कर सकते हैं. Monthly edition है. तो उसमें उस महीने के important cases, judgment, discussions on various issues related to various statutes, amendments, articles that gets published in the LLR, Labor Law Reporter, that also you can refer. Time मिलता है तो पढ़ सकते हैं उसको. Okay, otherwise all these acts are available on Google. I will share the new labor codes as well. तो ये 49 एक्ट्स को इकट्ठा करके 4 लेबर कोड बनाए हैं. अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, बट वो क्या है, क्या चेंजेस हैं, क्या करेक्शंस हैं, क्या इंक्लूजन्स हैं, दैट आई विल शेयर. ठीक है. सो यू कैन ऑलवेज रेफर एट योर कन्वीनियंस, राइट? इफ एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क. No, sir, not for now. No, sir. Oh my God, सब समझ में आ गया? No, sir, not like that. We इतना भारी reread था, it. इतना भारी था कि कौन मगजमारी करे. छोड़ो, जाने दो. वैसे ही 8:30 बज गया. होली का टाइम है, कहाँ रोज परेशान कर रहे हो. No, sir, not like that. हम लोग फिर से एक बार पढ़ के उसके बाद अगर कल की क्लास में कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे. So good news is that tomorrow I will not take the class. Thank you, sir. कितने खुश क्यों सर? है ना, क्योंकि कल टाइम नहीं है. तो सर कल का फिर कब लेंगे क्लास? तो कल का क्लास अर्चना मैडम लेंगे. अच्छा ठीक है, तब सही है. है ना, देखा कितने परेशान है मुझसे. I thought tomorrow it will be a holiday. Yes, sir. मतलब मैं वही आधा बोला बीच में आप लोगों ने टोक दिया. मैं बोला गुड न्यूज इज दैट tomorrow I will not take the class, but the bad news is that Archana madam will take it. You said this intentionally. अच्छा है, ठीक है, नहीं है.
ना, मतलब बैड न्यूज ये नहीं कि मैडम लेंगे, बैड न्यूज ये कि क्लास है कल, मैं नहीं लूंगा, मैम विल कंडक्ट. So I will take again maybe on 19th and 20th. Now 17th is Holi, I think, right? नहीं सर, वो होलिका है उस दिन, 18 को हाँ, होली है। जलाई जाएगी ना, हाँ सर, है ना, तो उस दिन रखना है क्लास शाम को. रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर YSI की तरफ से छुट्टी नहीं है और कन्वीनियंट होगा तो आई लेट यू नो, है ना. सो इफ द टाइम परमिट्स. अच्छा, उस दिन आप लोगों को तो छुट्टी होगा. सर हाँ छुट्टी। हाँ, विशाखा तो बोलती है मेरा तो छुट्टी है, पर हाँ सर, मेरा हमेशा छुट्टी है। तो बाकी लोग अगर अवेलेबल है तो ऐसा होगा तो दिन में ले लेंगे, शाम को नहीं. Sometimes in the afternoon we will have the session. Yes, sir. 17th I won't be available. 17th you won't be available. तू प्रहलाद को ढूंढने जाने वाली है. What sir? प्रहलाद को ढूंढने जाने वाली है होलिका में बिठाने के लिए. No sir. Going back to my parents. Sorry. I've come to my hostel, so I'll be going for like. अच्छा, you'll go home. Okay. So 17th is mine is not off. Mine off is 18th on Duleti. 18th तो we will not have the class ना. 17th I'll be available. So no. 18th तो ऐसा भूत बने होगे तो डर जाऊंगा देख के मैं तुम्हें. That is बहुत आना जाना भी होता है. तो 17th what time sir? 17th if possible. No. If we do it, we'll keep it in the afternoon if it is convenient to all of you, or if convenient Yes, to sir. all of us, you know, me also included. Okay sir. Okay. That So tomorrow Archana madam will take, and then we will see about 17th. I'll let you know on 16th. Okay sir. चलेगा ना? चलेगा. Okay sir. Otherwise 19th का तो fix. Okay sir. ओके सर। So enjoy the festival. Wish you a very happy Holi. In case we are not connecting on 17th. Same to you sir. Happy Enjoy Holi. the color. Let the life be equally colorful. 2 साल बाद मौका मिलेगा खेलने का, नहीं ठीक से. 2 साल तो मोदी जी ने नहीं खेलने दिया. सर खेलने वाले खेल ही रहे थे। Yes sir. उनके लिए कोरोना नहीं है। अच्छा, जिसको खेलना है उसके लिए कोरोना नहीं है. हाँ, वो खेलने वाले खेल रहे हैं। ठीक है. इस बार तो साहब बोले 10 तारीख से होली शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में. हाँ सर, वो जो रिजल्ट आया था चुनाव का, हम आप भी लोगों ने गए सर वोट दिया कि देने। नहीं दिया? हाँ सर, हम भी दिए हैं भाजपा को। ऐसा बोलने का ना, दूसरे लोग को केस कर देंगे. ये गोपनीय चीजें हैं. These are confidential things. You should not tell in public whom you voted. यस नहीं तो बाकी पार्टी वाले उठा के ले जाएंगे. उनको वोट तो नहीं दिया बोलते. It has to be confidential. यस सर। But anyway, enjoy your festival. Have a wonderful time. यस Yes, sir. Thank you sir. Yes, sir. Good night Good sir. night.